Don't lose hope is the moral of the story. CAT 22 is over, even QP sheet is also out, and you must have calculated your score. And if you think your CAT is screwed up and you're not able to get the good score, what can be done now? Let's see this, what next is there for you guys all, and how well you can, score in the coming exam, and what can be your strategy for next 2 months. So let's look quickly into what could be the reason why you went wrong, right? So let's take two prominent factors which usually decide, how your score went. I would put one is this your preparation, and second is your performance, right? Now it can be that your preparation was not up to the mark. You are in this category, your preparation was low, you are low on preparation, एंड योर परफॉर्मेंस ऑल्सो लो. सो यार इसमें तो कोई नई बात नहीं है, देखो आपने तैयारी भी नहीं की और आपका स्कोर भी नहीं आया. एंड सेकेंड कुड बी योर परफॉर्मेंस वॉज हाई एंड यू प्रिपेयर्ड वेल, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग विच यू शुड बी हैप्पी अबाउट, राइट? कि आपने प्रिपेयर किया, आपका अच्छा परफॉर्मेंस भी अच्छा हो गया, स्कोर भी अच्छा आ गया आपका. नाउ यू शुड बी गोइंग फॉर GDPI और फॉर अदर थिंग. नाउ दीज आर द टू ट्रबल एरियाज, राइट? इन फैक्ट दिस you will not count it as a trouble area, because if you are able to perform well irrespective of your preparation was not that well, right? आपका preparation कम था, फिर भी अच्छा हो गया. So you need to be careful. Why? Because you need to prepare for the next level. Next level पे आपका भैया तुक्का नहीं चलेगा. अगर इस बार चल गया, किसी भी कारण से आपका आ गया तो है. Now all those who are in this region, right? Those who have prepared well but they were not able to perform on that day, this is the video for them, right? Now having understood that you lie in this particular domain, right? And you think that or maybe you are in this domain you also, right? Because you got performance low. So but the strategy will be different for each one of you, right? दोनों का भाई strategy जो होगा अलग अलग होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ वाले लोग जो हैं बिल्कुल भी नाराज ना हो, क्योंकि उनके पास कम से कम अभी 7 से 8 अभी options और बाकी हैं. What are the options? You have snap options if you have filled, right? 3 slots. You have IIFT, if you have filled. You have ZAT, अगर नहीं फिल किया तो अभी फिल कर दो, डेट बाकी है. इसके बाद एक भाई माइका का एग्जाम आता है. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज, राइट? एंड इसका सेकंड स्लॉट आएगा. आई थिंक फर्स्ट स्लॉट इज ओवर, सेकंड स्लॉट अभी आएगा. देन यू हैव द एग्जाम कॉल्ड महाराष्ट्र CET, राइट? सॉरी, महाराष्ट्र CET इज द एग्जाम, क्योंकि आपका प्रिपरेशन है, ये मैं इन लोगों के लिए बता रहा हूँ. एंड देन देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड GBO, ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस, right? So this could be your opportunities to really make this preparation come out, give you the result. But if you are there, if you are here, आपने prepare ही नहीं किया लो स्कोर, तो क्यों निराश हो रहे भाई? CAT 23 पकड़ो, अभी से पकड़ो. Now all those who are targeting for CAT 23, right? CAT 23 जो target कर रहे हैं, so first, and those who have appeared for CAT 22 as well, so for them they need to understand that, right, there must be some performance in their section. Let us say they got 10 in the verbal, 12 in DILR, or maybe 5 in quantitative aptitude, and they are dreaming for, let us say, IIMs or maybe blackest. So for this you may need somewhere around 99 plus percentile, right? For that you may need around 90 score, right? Now the journey, you already are at 27, you are not at 0. So 60 marks you need to add, 20 questions you need to prepare. आपके पास almost 1 year है. How you can prepare for 1 year, this you need to plan it out, right? But if you have appeared for CAT 22, you are planning to go for CAT 23, make sure that you are going with a good planning, so that you are not repenting in the last, right? One more thing I will advise you to talk at least 5 people who have prepared for CAT 23 and they got through, right? CAT 22 जिन्होंने prepare किया और उनका अच्छा स्कोर आया. You must ask what worked well for them, right? What didn't work, what worked well, right? This will give you a good glimpse. I'm not saying please copy paste the complete theory, but at least yes will be very helpful, especially the student who are similar to your profile. Like if you are a average profile guy और आप IIT वाले से भैया पूछ बैठे तो आपको गलत एडवाइस मिलेगी, right? But if you are asking somebody who is more or less like your profile and he has made it this year, he has nailed it this year, he or she, so it will be good for you to understand that thing. Now for all those who are in this range, who are
going for this. We are supporting all the students with a very good crash course for snap as well as as IFT. For that it should be starting on, it's both are on. ये अभी भाई 2 to 6 चलता है, and we do this 8 to 10 every night, and the ZAT we shall be starting from 18th of December, right after this IFT is over. So you can take help from this, come to this, right? The fees is very nominal. It is 4,000 for each of the course, right? And the idea is, if you are prepared well, try to push yourself, right? Don't waste your attempt. Even if you are repeating, even if you are planning to repeat, I would say give your 100% in each of these 3 tests, and after that you can obviously go for GBO and other tests also, right? All those who want to join for CAT 23 SoGo 100 admission is on, right? The batch for 23, the admission is open, right? You can be part of this, but don't lose heart, right? And all those who are in this range, right? जिन लोगों का ये रेंज में है, भाई साहब अभी से आप अपना जो GD और PI है और उसका प्रेप करना शुरू कर दो. But let me tell you one thing, ZAT and SNAP also gives you good college, राइट? एंड इसको ढीले में नहीं लेना है. बहुत बच्चों का क्या होता है जो इस रेंज में आते हैं ना, ये वाला रेंज, दोज हु आर एबल टू डू वेल इन देयर दिस एग्जामिनेशन, राइट, इन कैट, वो स्नैप और जैट के टाइम पे ढीले हो जाते हैं. तो स्नैप, IFT और जैट आर इक्वली गुड कॉलेजेस, इन फैक्ट better in some aspects, so make sure you are doing this. Okay, for this category people who performed well what उनको expected नहीं था, फॉर्म फिलिंग के लिए बिल्कुल अलर्ट रहिए. देयर आर मेनी साइट्स विच गिव्स यू आइडिया अबाउट द कॉलेजेस दैट यू कैन फिल ऑन ए पर्टिकुलर लेवल, सो दैट फॉर्म्स शुड बी फिल्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 80 to 90 के बीच में परसेंटाइल आ रहा है, उसके फॉर्म की डेट से भैया पहले भर लेना, क्योंकि IIMs के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं भरना पड़ता है एक्सेप्ट IIM रोहतक. Rest all IIMs, rest all institutes, more or less you have to fill a separate form, right? If the date is after January, nothing to worry, right? Nothing to worry. But if the date is before the result, make sure you are filling them. You should not be missing on that, right? And all those who are in dilemma, for that we have started one option, right? 98770555. So you send your profile on this, right? Our counselor will be able to reach you and I will try to see what you should be doing. जितने भी लोग डायलेमा में है कि भाई सर मेरे को डिसाइड नहीं हो रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आप इस नंबर पे अपना प्रोफाइल के अंदर बेसिकली 10th 12th ग्रेजुएशन, राइट, और जो आपका कैट का स्कोर बना है, राइट, ये आप मोटा मोटा भेज देंगे तो आवर सपोर्ट टीम शैल बी एबल टू हेल्प यू in trying to understand what can be best for you. So don't lose heart is the moral of the story. गिरते हैं शह सवारे ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेगा जो घुटनों के बल चलेगा. तो भाई आपने कैट दिया, बहुत बहादुरी का काम किया है, और कैट देने से आपको पता चला कहाँ पे गलती हुई है और उस मिस्टेक को सुधारो और दोबारा से जो नए टेस्ट हैं, IFT है, स्नैप है, जैट है, इनको अलग तरीके से हैंडल करना. मैं बताता हूँ एक और चीज़ जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो IFT एग्ज़ाम है, जैट एग्जाम है और स्नैप एग्जाम है, ये बहुत डिफरेंट एग्जाम है. जैसे स्नैप इज एन एग्जाम ऑफ स्पीड, देयर इज नो लेयरिंग ऑफ क्वेश्चंस. जैट लेंदी होता है और डिफिकल्ट होता है, राइट, बट इसमें स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि ये ओपन होता है. सो डज IFT भी ओपन टेस्ट है, मतलब आपका सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ है बट सेक्शनल टाइमिंग नहीं है. सो दिस वे प्लीज़ कीप होप. लाइक IFT में क्या होता है कि यार जो कट ऑफ है आपकी वो बड़ी लो जाती है. जैसे लोग जीके से डरते रहते, अरे जीके की कट ऑफ कितनी जाती है 5.5, क्वांट की कट ऑफ क्या जाती है 10 12 15 जाती होगी ज़्यादा से ज़्यादा. सो इफ़ यू आर रियली फोकस, आपने अच्छा प्रिपेयर किया है, IFT कैन बी वन चांस वेयर यू कैन डू गुड. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टेइंग कनेक्टेड टू दिस चैनल. प्लीज डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स. लव यू ऑल.